Namaskar dosto, good evening friends, and welcome to Thursdays KK Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 895वां 895th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Now, eye diseases are increasing across the world and more so in India. The eye business, the eye care business, that is lenses, spectacles, this is thought to grow by at least twofold over the next decade. But while we speak of long-term eye diseases, there are short-term eye diseases as well. And North India is in the throes of a conjunctivitis or eye flu epidemic this season. Eye flu occurs with regularity, in various seasons, especially the monsoon season. And this is not the first time this epidemic has occurred. However, researchers say that eye flu is not just short-lived, it leaves its scars behind. So if you have eye flu and you don't take care of yourself, you end up permanently damaging your eyes. Now, since eye flu is so common, that brings us to the topic for today. Let's see what our topic is. It's eye flu. That's what our topic is today. Eye flu or conjunctivitis. And if we are going to discuss eye flu, then we need an eye surgeon to talk to. And we've already had with us Dr. Sumeet Khanduja on various occasions. Good evening, sir. Welcome back, sir. How are you, sir? All fine. Of course, everyone Am in I the audience. audible? Am I visible, Perfect. sir? Perfect. Everyone in the audience already knows you, but just to remind ourselves, Dr. Sumeet Khanduja is Associate Professor of Ophthalmology at the Kalpana Chawla Medical College, the Government Medical College in Karnal in Haryana. And now a full professor. Now a full professor. Sorry, sir, and congratulations. So a full professor. So, and this is for everybody in the KK Med Talk family. अब हमारे भी तल्लुकात बढ़ गए, हमारे भी standard बढ़ते जा रहे हैं over the past 2 years. So thank you so much, sir, and congratulations once again. Thank you, sir. Thank you for being with us, and good evening to you from Dr. Rameshpal Singh Pawar from Saharanpur, Swapna Jain Madam from Vellore, and Bimla Kapoor ji. And Rabia Omer ji joins us in greeting you from Pakistan, and congratulations on your full professorship. Thank you, sir. Now, the weather, the temperature, everything is the same in North India and Pakistan. The health challenges are also the same. So, Dr. Sumeet, what kind of challenges are you facing in the eye OPD, in the ophthalmology OPD these days? Sir, right now, actually, as is the topic today, and I think we had a conversation on it. Right now, we are facing an epidemic of cases of conjunctivitis, that is eye flu. That is coming. We are getting nearly 120 patients a day, and Okay. it has become very difficult now to actually segregate them from the normal OPD. That is the biggest challenge. That is how to, so we have started a dedicated flu counter, a flu clinic, just like there was a flu OPD that COVID. was there in the times of COVID for patients who were having fever and features of acute respiratory infection. The same has been done for patients of ophthalmology now. So you've used the word conjunctivitis. Sir, आपने शब्द इस्तेमाल किया, लफ्ज इस्तेमाल किया conjunctivitis. तो conjunctiva क्या होता है? सर कंजंक्टिवा इट इज अ थिन, बिल्कुल एक पतला सा एक मेम्ब्रेन, एक म्यूकस सा मेम्ब्रेन होता है, जैसे हमारे मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो वैसे ही आई का जो सबसे ऊपर का सुपरफिशियल सरफेस है, जो कि आई को प्रोटेक्ट करके रखता है और लुब्रिकेट करके रखता है, उसको हम लोग कंजंक्टिवा बोलते हैं. तो दैट आंख टिश्यू, जो है, आंख जो है वैसे ही बहुत नाजुक सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का. फिर हम कह रहे हैं कि कंजंक्टिवा प्रोटेक्ट्स द आई, मगर कंजंक्टिवा खुद ही इतनी नाजुक है, तो ये नाजुकता में भी ताकत है क्या? यस यस सर, बिल्कुल. जो ये नाजुक जो म्यूकस टिश्यू है, ये एक बैरियर का काम करती है फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, कि वो ज़्यादा डीप ना जाए आई के अंदर.
और वो अपने ऊपर ले लेती है। बहुत सारे इसके अंदर एंटीबॉडीज घूम रही होती हैं, और ये म्यूकस सेक्रीट करती है जो बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लेती है। इट इज it helps in preventing the infection going deeper in the eye. सो दैट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर। जो कंजंक्टिवा है ये हमारा बाहर वाला लेयर है आई का, और अगर हम इसका ख्याल रखें, ये हमारी बाकी आंख का ख्याल रखेगी, ये जो कंजंक्टिवा है, और विजन में मदद करेगी है। सो Yes, जब ये कंजंक्टिवाइटिस होता है, जो आपने वर्ड यूज किया, तब क्या हो जाता है कंजंक्टिवा को? व्हाट sir. हैपेंस इन आई फ्लू? Yes. So basically, conjunctivitis means swelling of the eye, एंड तो ये जो टिश्यू है, ये म्यूकोसा जो है ये फूल जाता है इनफेक्ट, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ एलर्जी और एनी रीज़न जो आजकल हमारे को आ रहा है, दैट इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन। सो जो ये टिश्यू है ये रेड हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सर आई में पेन होती है, रेडनेस होती है एंड डिस्कम्फर्ट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड आपने वायरल कहा। अब जब वायरस की बात आती है, पहले हमारी भाषा में हमारी शब्दावली में वर्ड बार बार यूज होता था, वायरल फीवर, वायरल फीवर। देन वी बिगैन स्पीकिंग अबाउट कोविड। कोविड ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ वायरल फीवर। तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस वाला वायरस है, ये कोविड जैसा है? सर ये कोविड से थोड़ा अलग है, जैसे एडिनो वायरस। और ये पहले भी मतलब इट इज़ नोन कि ये आई के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। रैदर आपको याद हो तो जब हम छोटे थे तो ऑलमोस्ट इन समर वेकेशंस एवरीवन जो अपने नानी के घर जाता था तो वो ये आई फ्लू लेकर ही आता था। तो इट वाज वेरी कॉमन स्प्रेडिंग कि एक बच्चे को हुआ तो वो सारे के सारे कजन्स के अंदर इट यूज्ड टू गेट, पीपल यूज्ड टू हम्म। गेट। So this eye flu is not a new problem. It is actually an old problem. But now, somehow after the rains in this area, the virus it started spreading. So that is एंड you said 120 patients every day. Then you every said day. we have to segregate them, अलग करना है। तो इन्हें अलग करने की क्यों जरूरत है सर? सर अलग करने का जरूरत इसीलिए है, अलग करने का जरूरत इसीलिए है बिकॉज दिस वायरस इट बेसिकली हाउ इट स्प्रेड्स इज दैट फॉर एग्जांपल आई गेट आई फ्लू, आई विल रब माय आई आउट ऑफ इरिटेशन, आई विल क्लीन माय हैंड विद माय शर्ट, somebody will touch my hand or it will touch my shirt, so the other person will also get it. So there was a time जब हमारा 30% of hospital staff and around 15-20% of operation theater staff was having eye flu, and we had to give leaves to people or give them rest so that this chain could be broken. तो एक तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इन पे बर्डन ज्यादा पड़ता है, बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट्स गोज अप। Yes, दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो लोग मैन करते हैं, जो मेन हैं, विमेन हैं, जो काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग आई फ्लू। yes sir, yes sir. अब फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी ट्रीट आवर सेल्स, हाउ डू वी प्रिवेंट? एंड वालिद बाबर जी को आदाब करते हैं। ही सेज आई एम इंस्पायर्ड बाय मेडिसिन एंड इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। एंड कैलाश चावला जी, जो कि लीडिंग डायबिटीज एजुकेटर हैं, हेल्थ एजुकेटर हैं दिल्ली के, वो आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं। Good evening sir. एक सवाल आ रहा है प्रतीक महेश्वरी साहब से। सर, आई एम टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन इन आई फ्लू, डज दैट मेक सेंस? No, not really, sir, because azithromycin is an antibiotic, and antibiotic means it is used to treat bacterial infections. Azithromycin is already a drug that you use for lower respiratory tract infections. This is a viral infection, sir. This is not a bacterial infection. So taking azithromycin would probably be an unnecessary effort from his side, sir. So then the next question is automatically from Ishwari Saab, then what do we do? So how do we prevent eye flu? That's the first question. Yes. So, sir, the biggest prevention of eye flu is what I am carrying with me. This is a bottle of sanitizer that before touching a surface, after touching a surface, decongest or decontaminate your hands either with a sanitizer or by
washing with soap and water. Number one. Number two, resort to saying namaste and not hello while exchanging greetings. And if you are yourself working in a healthcare setup and watching patients from close, so use a have a, for example, we as eye specialists have started using a protective shield in front of our slit lamps. तो ये पॉइंट बहुत वेल टेकन है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल अगर आप ये करें एंड अवॉइड टचिंग हैंड्स, टचिंग ईच अदर, सो यू कैन एक्चुअली ब्रेक दिस चेन ऑफ आई फ्लू। तो Yes, प्रिवेंशन तो इसका मतलब हमारे अपने हाथों में है। अपने हाथों में है, सर। जो भी आपने अपने बात की हाथों सब को अपने रिलेटेड टू पास हैंड, रखने हैं। अपने हाथ अपने पास रखने हैं, राइट? Okay. So, supposing we are not able to prevent, then how do we manage it? अब किसी को पता कैसे चलता है सर कि आई फ्लू होने वाला है? Is it Sir, redness? Is it yes. burning? So most of the patients they start coming with that, ever since they've got up in the morning, they're having pain in the eye, redness in the eye, slight lid swelling is there. So these are the features जो आते हैं जिससे patients. Hmm. Any other suggestions for cure? कोई आई ड्रॉप्स, कोई दवाई, कोई देसी टुटके, या none of the above work? Sir, actually देखो, one thing is very important that I have been telling people, once this eye flu came up and we were getting 120 patients a day. So just give me a second. Yeah. So that's we were getting 120 patients a day. The biggest happens is that the prescription of a doctor, it starts getting circulated on social media. Sir, am I visible and audible? So I am, Yes. because I want to make a very important point. Perfect. For the reason that many people start circulating our prescriptions on the social media. Why? Because you everyone wants to avoid visiting the hospital. So many of my people, they actually shared me कि सर हमारे को आई फ्लू हो गया है, ये दवाई डाल लें. So why I want to emphasize is that I always tell them that eye flu is not the only cause of red eye. आजकल ये मान लिया कि रेड आई जो है, आई फ्लू ज़्यादा हो रहा है, बट हमने एंटीरियर यूवियाइटिस, बच्चे के अंदर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, मतलब उसके आँख में जो है एक थॉर्न लग गया था, कांटा लग गया था, जिसके कारण उसको आँख में इन्फेक्शन हो गया था, और हमने एक आई ट्यूमर, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा का पेशेंट, जो कि कैजुअली इट वाज लेबल्ड एज आई फ्लू and given eye drops and sent away. We caught these patients. Hmm. So my always word is that do not treat yourself with by just visiting a chemist or taking a prescription from your friend over the WhatsApp. What many people, what they expect is send us some photographs of their eyes on the WhatsApp and expect us to write a treatment, and sometimes they even come up with a treatment on their own. But red eye is not just because of eye flu. There are many other reasons. And in this last 1 week or so, when the cases were peaking, we did actually catch a few cases that were serious ocular conditions to the grade of an eye tumor, sir, retinoblastoma. Yeah. I'm not joking. Which were had presented as a red eye and were casually being treated as conjunctivitis. So the Although point the which, cases are on no decline, hmm, so, but do visit your doctor just in case you have a red eye. the point that Professor Khanduja wants to make is, जो point डॉक्टर साहब शेयर करना चाह रहे हैं कि अगर आपको आंख में दिक्कत है, अज्यूम ना करें, ये ना सोचें कि बस सिर्फ आई फ्लू है, कोई और दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बात की आई ट्यूमर की, रेटिनोब्लास्टोमा की, और डायबिटीज में एक बीमारी होती है ग्लोकोमा, जिसको हम हिंदी या उर्दू में काला मोतिया कहते हैं, उसमें भी रेडनेस आ सकती है आंख में। तो मल्टीपल, Absolutely. हाँ, और ये भी काफी Absolutely. कॉमन है You're और right. कई बार हम मिस कर देते हैं ओपीडी में, जबकि पेशेंट एक्चुअली बता भी रहा होता है वो सिम्टम्स और हम ध्यान से नहीं सुनते। तो यदि कोई ऐसी दिक्कत है रिलेटेड टू आईज या हेडेक, तो एक बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। प्रोफेसर सुमित, अली नजाकत साहब आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं।
गुड इवनिंग सर। And Dr. Ramesh Pal Singh Pawar sir पूछते हैं, should we use eye drops in children or any anti-allergic drops or medications in children with eye flu? Yes. So we, sir, we are not anti-allergic. We do give them non-steroidal anti-inflammatory drops, and in case there is जब कॉर्निया के ऊपर सर अगर इन्वॉल्वमेंट आती है तो we give them mild steroids. This viral conjunctivitis is one of the conditions in the body जहाँ पर हम लोग एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स दोनों इकट्ठे देते हैं. एंड व्हाई एंटीबायोटिक्स आई विल टेल यू व्हाई वी गिव इज बिकॉज टू प्रिवेंट अ सुपर एडेड इन्फेक्शन. We give a mild antibiotic like tobramycin to prevent super added infection. So, as such, anti-allergics do not have a strong role, sir. And बच्चों में आई फ्लू ज्यादा होता है, जल्दी हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है. Sir, Any difference yes. between Sir, children? actually, इस बारी जो हमारे पास जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो एडल्ट्स के आ रहे हैं. Okay. हमारे पास जो अब केसेस आ रहे हैं सर इस बारी दे आर मोस्टली एडल्ट्स. यस, हमारे पास स्कूल से एक्चुअली इस बारी तो सर मैनी बहुत सारे स्कूल्स ने दे स्टॉप द किड्स फ्रॉम कमिंग टू स्कूल. Anyone who had even the slightest right eye, so they were sent off. In the initial days में हमारे पास ऐसा हो रहा था कि we were getting 20 से 30 बच्चे इकट्ठे एक ही क्लास के वो आ रहे थे. बट देन फिर हमने देखा कि बच्चों में इतना कॉमन नहीं था. ये मेरे एरिया का सर डेमोग्राफिक है. एडल्ट्स वर गेटिंग इट. और अगर कोई महिला हो जो प्रेग्नेंट हो, कोई गर्भवती महिला हो, उनमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नो लेनी इश्यू हो? सर. एक्चुअली मोस्ट इन ये जो आई फ्लू है जो अब जो वायरस का स्ट्रेन आया है इट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू टॉपिकल ड्रॉप्स. The disease is limited to 5 or 6 days, like at the most 10 days. So that's it, there is no problem. सो दैट इज हार्टनिंग टू नो कि इस बार बच्चे इतना तंग नहीं हो रहे. वालिद बाबर साहब Right, पूछ रहे हैं, right. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिजीज रेटिनोब्लास्टोमा? Okay, so retinoblastoma, it is a rare tumor of the eye. It starts from the retina and धीरे 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 एक मास है जो कि आई में ग्रो करता रहता है. उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है एंड देन इट कैन स्प्रेड आउटसाइड द आई. आई से जो है वो आपके ऑर्बिट बाकी टिश्यूज में जाके फिर मेटास्टेसाइज करके ये बोन्स में जाके इट कैन कॉज डेथ. ये प्राइम मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है आंख का. बट एज सच द ओवरऑल जो प्रेवलेंस है वो कम ही है. We don't need to worry too much about this. I mean, it's not that नो नो नो. everybody, Walid Sahab, will हाँ हाँ. have. तो Uh, मेरा सर आइडिया ये नहीं था कि मैं किसी को डराऊं कि ये जो है ये कि आप कल ओपीडी पहुंच जाएं ये चेक कराने के लिए. बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नेवर जस्ट डिस्कार्ड एनी सिम्टम कि आजकल ये चल रहा है तो ये यही होगा. डॉक्टर को जरूर दिखा लें, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है मेरा बताने का. डॉक्टर पवार सर पूछ रहे हैं कि मैं बच्चों में टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप्स यूज करता हूँ, सो इज दैट फाइन? सर फॉर दिस कंडीशन I think for prophylaxis of super added infection in conjunctivitis. ठीक है सर. दैट इज परफेक्टली फाइन. दैट इज परफेक्टली फाइन. दैट इज परफेक्टली फाइन सर. द मेन थिंग, जैसे डॉक्टर सुमित कह रहे हैं, दैट इज हाइजीन. और जब कोविड की भी बात हम करते थे, कोविड में से हम निकले हैं 2-3 साल, तो बड़ी सारी रिसर्च आई, बड़ी सारी रिसर्च गई, पर एक चीज जो पक्की थी वो थी कि अगर आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, अपनी सफाई मेंटेन करके रखें, तो आप कोविड की स्प्रेड को रोक सकते हैं. ऐसे ही कंजंक्टिवाइटिस के साथ आई थिंक द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट treatment, the single most important prevention will be personal hygiene. Yes, I think for any infection that has a fomite transmission, best is to maintain hygiene. तो अब तो सर इतना ज़्यादा फोबिया हो गया है कि कोई रेड आई का पेशेंट आता है तो मैं तो सैनिटाइजर अब जेब में ही रहता है. That is actually a good thing. तो पंकज सिंह जी पूछ रहे हैं, जो आपने अभी हैंडल किया था, और कंचन सिंह नेगी जी भी पूछ रही हैं, if I find out eye flu, which eye drop should I use? And I have very light redness. What should I use?
तो मैं यही एग्जैक्टली बोलूँगा कि मैं इसका जवाब नहीं दूँगा because I do not want कि KK MedTalk should adopt such a policy of using drops without seeing the patient, of using any medicine without seeing the patient. Hope, sir, you will support me on that. फुल्ली एग्रीड। एक्चुअली हो क्या गया है कि इन ऑल फील्ड्स वी सी थिंग्स आर बिकमिंग फास्टर, मोर रैपिड, दैट इज राइट, बट गड़बड़ भी होती है। जैसे हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, जैसे डॉक्टर सुमित ने भी कहा, सर फॉर व्हाट्सएप पे एग्जांपल इट इज पिक्चर वेरी दे दी। कॉमन, पीपल टेल मी मेरी फास्टिंग 170 है, पोस्ट हाँ, प्रेंडियल 260, विच गोली मेडिसिन शुड लिखो। आई टेक, कौन सा? जो बाकी चीजें हैं कि कब से था, कितना था, कहाँ था, वजन कितना है, हार्ट की दिक्कत, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, वो सब चीजें भी तो मायने रखती हैं। ऐसे ही डॉक्टर खंडूजा ने अभी क्या पॉइंट आउट किया कि एवरीबडी विद राइट आई, रेड आई डज नॉट नेसेसरली हैव आई फ्लू, देयर मे बी अदर डिजीजेस। सो यू हैव टू चेक द प्रेशर ऑफ द आई, यू हैव टू लुक इनसाइड द आई कि आंख के अंदर क्या है। रेडनेस के बहुत सारे कारण होते हैं और कई बार गड़बड़ भी होती है। ये हम चीज़ बहुत कॉमनली देखते हैं गायनी में। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हिच यू कैन यूज एनी टाइम, और वो यूज तो लोग कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन हुई कि नहीं हुई दैट इज सेपरेट मैटर, बट जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो बाद में भुगतनी पड़ती हैं। पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जिस लेडी को या जिस कपल में कॉम्प्लिकेशन आती है, दे आर नॉट गोइंग टू गो एंड टेल एवरीबडी कि हमें ये कॉम्प्लिकेशन आई, ये दिक्कत आई। सो दैट इज द बिगेस्ट इशू। ऐसे ही जो रेड आई है, ज्यादातर आपको आई फ्लू दिखाई देगा, बट जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन है वो आपको नहीं दिखाई देंगे बिकॉज दे विल नॉट कम ऑन सोशल मीडिया। सतनाम सौरभ जी पूछते हैं, सत्यम सौरभ जी, सर मेरी फैमिली में सबको हो गया आई फ्लू, बट अभी तक मुझे नहीं हुआ, तो ये मेरे अच्छे कर्म हैं, व्हाट डू आई डू इन फ्यूचर ताकि ऐसे ही कर्म बने रहे? मतलब सर वो दुखी हैं इस बात से या खुश हैं कि he सौरभ is खुश not है feeling a और part of the family, या he is lucky that he has been saved? सौरभ भैया इसका जवाब दे दो प्लीज, बट तब तक डॉक्टर सुमित जवाब देते हैं। सौरभ कभी करनाल आओगे ना, यू कंचन, जब आप कभी करनाल आओगे यू विल अंडरस्टैंड कि डॉक्टर सुमित के साथ आप 5 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकते बगैर ऐसे, सो यू जस्ट कीप ऑन लाफिंग। सो So सो that's ओके, सो fine, व्हाइल sir. यू If he's lucky that he has not yet got it. लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। सौरभ खुश है अभी। Sir, I always tell people, I'll tell you हाँ, that डर in लग रहा one है, हाँ family, सर, सौरभ अगर इज हाँ, हैप्पी। हाँ, बट उसको तो डर लग सर रहा है कि अब हो ना जाए। सो सर क्वेश्चंस विल वन बी वेरी लाइक, सिंपल पॉलिसी मैं जो बताता हूँ हम्म, कि अगर आपको आई फ्लू है, ठीक है, आपको तो है, बट ब्रेक द चेन, ठीक है ना सर, एंड अदर फैमिली मेंबर्स विल गेट इट। आपके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज लाइक मेनी पीपल दे हैव गॉट, उनके आंख में से कीचड़ आ रहा होगा, डिस्चार्ज आ रहा होगा, उसको पकड़ के वो चद्दर से साफ कर देंगे। वायरस करीबन 5 से 6 दिन जो है वो सरवाइव कर जाता है फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप इरिस्पॉन्सिबली अपने जो है अपने वाइफ के टॉवल से अपनी आई क्लीन करके उसको रख देंगे, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विल क्लीन इट शी विल आल्सो गेट इट। सो एट दैट पॉइंट व्हाट आई से इज दैट जब आपको आई फ्लू हो अपनी दवाई डालो, stop sharing your towels, your handkerchief, or your clothes with other family members. Number two. Number three, you take a half a bucket of water, put 4 dhakkan of Dettol or Savlon in it, and put your clothes in that, and let them be there inside. Let the virus die, and then you can wash your clothes maybe in the same washing machine as your family, or you can do them yourself cleanliness. Wash them separately. So, sir, as you know that viral infections जो हैं, they would take their own time for healing. Not only just like maybe viral, you get a fever in winters or when your weather changes, or you get a viral bronchitis or anything. तो viral infections वो अपना टाइम लेते हैं। हमारे को उस टाइम पे सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है, इंफ्लेमेशन लो रखना होता है। तो सेम इज विद वायरल कंजंक्टिवाइटिस की वायरल कंजंक्टिवाइटिस अपना टाइम लेगा जाने में। हमारा काम है कि उस टाइम पे पेशेंट को कंफर्टेबल रखें और सुपर एडेड इन्फेक्शन ना होने दें और वो चेन को ब्रेक करें कि दूसरे लोगों को ना हो।
तो बस उनको भी यही सर जो है फैमिली के अंदर मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, एंड देन दैट इज इट सर। जो पॉइंट सर ने रेज किया, प्रोफेसर साहब ने, अबाउट मेंटेनिंग हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बनती है। तो पानी खूब पीते रहें, जो भी जैसे मौसम है, लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, या जलजीरा, वट एवर यू लाइक, मतलब वो लेते रहें। मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड, एंड अपनी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें। ठीक है, हाई न्यूट्रिशन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। सर, दो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। एक तो है कि एयर कंडीशनिंग घर में एसी होते हैं, तो उससे भी बढ़ता है क्या आई फ्लू? सपोजिंग आई हैव आई फ्लू, कैन आई सिट विद द रेस्ट ऑफ माय फैमिली इन द सेम एयर कंडीशन रूम और नॉट? सर एक्चुअली थोड़ा सा बिकॉज आपका टीयर फिल्म के अंदर वायरस है, तो देर इज अ चांस कि दैट उससे वो एरोसॉल स्प्रेड हो, एरोसॉल बने, एंड इट कैन गो टू द अदर पर्सन। तो आई वुड रेदर रिफ्रेन कि आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करो। तो कमरा बदलने और 2-3 दिन की बात है सिर्फ, सो डू दैट हाँ एंड बाकी फैमिली बची रहेगी। हाँ। डॉक्टर अनुपमा देशमुख has joined us just now, so just for the sake of completion, so मैडम पूछ रही हैं, कैन आई प्रिस्क्राइब टोब्रामाइसिन और मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स Yes, टू sir. I was पीडियाट्रिक just पेशेंट? reading this question whether these two are the safest antibiotics for neonates. When we examine children of retinopathy of prematurity, so these eye drops, tobramycin and moxifloxacin, are one of the safest eye drops for neonates. So you सो can. गुड प्रैक्टिस डॉक्टर अनुपमा, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस एंड रिमाइंडिंग अस अगेन। पंकज सिंह जी हमें फिर से याद करा रहे हैं दैट वॉश द आई रेगुलरली एंड कीप योर हैंड्स क्लीन, एंड No, दैट sir. विल हेल्प Don't अस। wash the eye. Wash your hands, not the eyes. I'll tell you the नॉट द reason that आपकी जो बॉडी है सर, वो खुद एंटीबॉडीज बना रही है टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। वो एंटीबॉडीज कहाँ आ रही हैं? वो आपकी टीयर फिल्म में आ रही हैं। नंबर वन, आप जो दवाई डाल रहे हो दैट इज ऑल्सो रिटेन इन द टीयर फिल्म। So if you are washing away your eye, you're washing your eyes multiple times. So that washes away your tears. आपके जो टीयर्स हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं, उसके साथ में आपकी जो दवाई डली हुई है आँख में वो भी वॉश ऑफ हो जाती है। तो रेदर मैं बोलूँगा कि आप उसकी वॉशिंग ना करो। अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो सर आप आई स्पॉन्जिंग कर लो। दैट इज यू कैन पुट आइस in a clean हैंकरचीफ और लिनन, handkerchief. लिनन। Yes, and then you can actually kind of soothe your eyes. It gives soothness to your eyes, and do little bit of eye sponging or icing of the eyes. That helps rather than splashing cold water, जिससे कि जो आपकी नेचुरल टीयर्स हैं वो भी वॉश ऑफ हो गए, दवाई जो थी वो भी वॉश ऑफ हो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभलता चिटवाल मैडम, मैडम इज फैमिली फिजिशियन फ्रॉम दिल्ली। वो भी आपको थैंक यू कर रही हैं फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। तो अब खासियत है सर की कि एक तो ये बताया कि हम क्या करें और क्या ना करें, मगर साथ में ये भी एक्सप्लेन किया भी ऐसा क्यों किया जाए, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन टू अदर पीपल ऑल्सो एज वी मूव हेड। एंड जब हम एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ समझाते हैं, तो उससे भी आई फ्लू की जो चेन है वो टूटती है। एजुकेशन से हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। सर, सो मेनी क्वेश्चंस एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट आई फ्लू, और पहले भी आप हमारे शो पे आए हुए हैं, आपने इतनी सारी बातें की हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी के बेसिक्स, लेंजेस के बेसिक्स आपने हमें समझाए हैं। ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग टू आई हेल्थ अक्रॉस साउथ एशिया? हैज इट बिकम बेटर? पहले कौन सी बीमारियां थी? ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कितनी थी? अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गई हैं? So improvement is blinking in a pot of fresh water. No, I think Rameshwar Pal Singh sir had a question. हाँ, Sir, so यस। you don't need to sir blink in a pot of fresh water. Sir, I sir, because sir there has been a plethora of change. Mm, we have been able to manage vitamin A deficiency related blindness because of the programs of immunization and vitamin A supplementation. Uh, so because of improved school health screening for visual disabilities, a lot of children who had refractive errors and had amblyopia, that has decreased. But what we are seeing on the cataract screening programs have become robust. The reach
for of surgeons with advanced technology for cataract surgery that has become possible in even the smaller areas of the country. But what I feel right now is a challenge for us is that we are becoming the diabetic capital of the world, sir. And the way diabetic retinopathy is increasing in our patients, that is alarming. That is uh, a cause of great concern. The way people are getting blind, sir, because of diabetic retinopathy, that is a big botheration. I see my OPD full of patients who are at of various ages and at various stages of blindness because of diabetic retinopathy. Also, a bigger challenge that remains is that anti-VEGF drugs, which are used to treat diabetic retinopathy, are still quite expensive and out of reach of many people. Although, sir, with the grace of Almighty, I was able to convince uh, my administrators that we have now these, drugs, expensive anti-VEGF drugs, each injection costing 22,000, covered for poor people under the Ayushman Bharat scheme by the government of India. But still, for many people, getting an access to these treatment remains a challenge. दैट इज चैलेंज भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत बढ़ रही है एंड ब्लाइंडनेस ड्यू टू डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ऑन द राइज. अच्छी चीजें हैं दैट वी बीन एबल टू ओवरकम विटामिन ए डेफिशिएंसी, वी बीन एबल टू ओवरकम कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस ड्यू टू कैटरैक्ट, एंड वी विल बी एबल टू हैंडल दीज अदर challenges as well. And he has also shared a best practice, how he has been trying to advocate with the government. सर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. एक तो सौरभ भैया को शाबाशी देंगे, हर एक आवर में हैंड वॉश कर रहा हूँ, वेल डन सौरभ. एंड आइज टच नहीं कर रहा, शाबाश. आइज के साथ देख सकते हो आजू बाजू, दैट्स अलाउड छोटे भैया. एंड शायद इसलिए 4 दिन से बचे हो. यस, दैट इज एक्चुअली ट्रू. इट्स बिकॉज ऑफ द हाइजीन दैट यू आर कीपिंग. सौरभ ऑल्सो आस्क्स, बोथ माई पेरेंट्स हैव डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर. तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जब उनको आई फ्लू होता है, एनी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दैट दे हैव टू टेक, हाउ कैन दे प्रिवेंट फर्दर So not कॉम्प्लिकेशन? as such, but ये है कि sir diabetics have in general have a lower immunity as compared to normal people. So going by that, as such, most infections tend to be severer in diabetics than in non-diabetics. So that is the only, I would say, anything that different that has to be done. The medicines have to be put in the same way, nothing differently. But yes, diabetics generally have a slower healing process as compared to normal people. सौरभ, मम्मी पापा को ये जरूर बोलेंगे कि अपना बीपी और शुगर कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें. बीपी शुगर की दवाई ना बंद करें, और एक बार जब आई फ्लू ठीक हो जाए तो फिर एक बार दोबारा वो जाके अपनी आईज चेक कराएं. द टेस्ट इज कॉल्ड अ रेटिना टेस्ट और फंडोस्कोपी. वो आई सर्जन ही करेंगे. और यदि कोई दिक्कत आती है तो देन वी माइट चेंज द बीपी मेडिसिन एंड आल्सो द डायबिटीज मेडिसिन. जैसे एक Right. दवाई आती है पायोग्लिटाजोन, वो हम बंद कर देंगे. ऑल्सो अगर थोड़ी बहुत भी आशंका है रेटिनोपैथी की, देन वी विल मेक श्योर दैट वी आर गिविंग मेडिकेशन फॉर कोलेस्ट्रॉल. एंड एक एस इनहिबिटर आते हैं, पेरिंडोप्रिल, टेल्मिसाटन. ये वैसे तो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होते हैं, मगर स्टडीज हैं जो बताती हैं कि ये रेटिना को भी सेफ रखती हैं. एक फिनरेनोन दवाई है जो हम यूज करते हैं किडनी डिजीज में, उसकी भी स्टडीज हैं कि वो रेटिना को सेफ रखती है. सो द डॉक्टर जो भी शुगर का इलाज कर रहे हैं, he may wish to start some of these medications, and he may decide to stop some of the earlier medications, like for example pioglitazone. So once the eye flu is over, I think a proper checkup is indicated. कलाडिया क्रिएशन से एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर खंडूजा, इफ यू अलाउ. आई फ्लू से बचने के लिए कितने डिस्टेंस की दूरी रखें? Well, sir, as such, there is no discrete answer, है ना? हम्म, तो but I think an arm's length is good enough at least. एक हाँ. बाजू जितना डिस्टेंस. और ललित कथुरिया साहब हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सोनीपत से. वो कह रहे हैं आर्म्स डिस्टेंस आपने कहा, तो बाजू में जो है उसको आंख मार सकते हैं क्या? उससे आई फ्लू होगा? जो ट्राई कर सकते हैं, मेरे मरीजों के साथ बैठ के मैं उनको बोलूंगा उनको आंख मारते रहें, अगर हो जाए तो बता देना. Okay, so good work for Lalit to do. With this, I'd like to thank you for being with us today, Dr. Sumit. बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई फ्लू है तो सही, हम सबके बीच में है, बट नाउ वी आर मोर
more confident. हम चुकन्ने भी हो गए हैं, confident हो गए हैं. We'll be more vigilant and we'll follow the simple advice that you have given us. स्वप्ना जैन जी इसको समराइज करके दे रही हैं. डॉक्टर सुमित, अगर आप पढ़ना चाहें प्लीज Yes, द no, I मैसेज. think it's I have seen it. It's perfect, हाँ, perfect. जो मैम ने लिखा आप है. पढ़ दें एक बार प्लीज, बिकॉज So maintain hygiene, stay hydrated, sponge your eyes with not ice water, ओके. ice in a clean linen in case of irritation. Break the chain of spreading, and more importantly, consult your eye specialist. Thank you, doctors, for sharing this. एंड थैंक यू सपना जैन मैडम जी फॉर सिंप्लीफाइंग ऑल दिस फॉर अस. थैंक यू सो मच. एंड Thank you. सौरभ, वेल डन. सौरभ इज अ गुड बेटा. और भगवान सौरभ से भी ज्यादा अच्छे बच्चे दो इन फ्यूचर, जो उसका और ज्यादा बढ़िया ख्याल रखें. With this, I'd like to thank everyone for having logged in today. जैसा कि आप जानते हैं, केके में टॉक्स होता है रेगुलरली. मैं मंडे और थर्सडे के स्लॉट लेता हूँ. आजकल ज्यादातर हमारे थर्सडेज को फार्मा टॉक्स होती हैं, वेयर वी टेक लीडर्स फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल और अलाइड इंडस्ट्रीज. प्रोफेसर सुमित खंडूजा को तहे दिल से थैंक यू करेंगे फॉर ज्वाइनिंग अस एट द लास्ट मिनट टुडे. आई फ्लू is a topic of importance today, so we thought we should have a discussion on this. आप सबको शुक्रिया कहेंगे फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द केके मेडटॉक फैमिली. एंड डॉक्टर केके अग्रवाल सर की लेगेसी जो है वो सब इकट्ठे मिलके हम चला रहे हैं. डॉक्टर खंडूजा, आप सब लोग, सौरभ के मम्मी पापा, मैं, स्वप्ना जैन जी, ऑल ऑफ अस टुगेदर. सो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली. And we have Batul with us backstage. Batul, could you please show a certificate of appreciation for Professor Khanduja? Thank you, sir. It's perfect, and we'll make a new one with Professor written, PROF, Prof, जिससे हमें और ज़्यादा खुशी मिलेगी. सबको Thank you, sir. शुक्रिया. एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुमित, if you can help us. This is from Dr. Deshmukh. How do I differentiate between eye flu and other diseases? Any simple tips? This is, I So think, from a physician. that is on a slit lamp, sir. On a slit lamp, that's a kind of a whole मतलब chapter of ophthalmology, that how to differentiate between differentials of acute red eye. वो उसके लिए जो है आपको एक बारी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे आके उनका जो इंस्ट्रूमेंट है स्लिट लैम्प, उसके ऊपर ही चेक करके सर जो है वो बताना उसी पड़ेगा. से ही बता पाएंगे. हाँ. राइट. एंड स्माइली एंड थैंक यू फ्रॉम प्रदीप लोधी जी एज वेल. इस सब के साथ, इन मैसेजेस के साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं. शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, एंड जय हिंद डॉक्टर खंडूजा. थैंक यू सर.